Well, it was yet another 100 for Harry Brook. He's been magnificent this tour of England. And then it was the bowlers in action. Ollie Robinson amongst the wickets once again. But then we saw a bit of a partnership between Imam ul Haq and Saud Shakeel to steady the ship for Pakistan. Well, the match is evenly poised at this particular time. Pakistan perhaps would have been in an even better position had Imam ul Haq been on the crease, but they need 157 runs to win, whereas England will be eyeing those 6 wickets. Hello and welcome to the Inverex Solar Energy Pitch Side Show, and I've got a very, very special guest next to me, of course, Badat Khan, and the coach of Pakistan cricket team, Saqlain Mushtaq. Saqi bhai, ये बताएं कि इमाम उल हक की जो विकेट थी उसकी टाइमिंग शायद थोड़ी सी होगी, बट अच्छी एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, तो ओवरऑल पहले बताएं मैच की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? वाकई सिचुएशन जिस जगह पे वो आउट हुआ वो तो अच्छी नहीं थी। पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इमाम उल हक सुबह हॉस्पिटल में था, उसकी MRI स्कैन करवाया गया, हैमस्ट्रिंग थोड़ा काफ़ी टाइट था, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइट था, इश्यूज़ थे, बट जिस किस्म की उसने करेज आज शो की है और जिस तरह की कॉन्फिडेंस उसने दिखाया और ख़ुद आके मुझे कहा कि सैकी भाई मैं ख़ुद जाऊंगा बैटिंग करने के लिए, हॉस्पिटल से आते ही मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे ड्रेसिंग रूम में करेज और कॉन्फिडेंस लेके आया और उसके बाद जो उसने नॉक किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए। आई थिंक ये जो जैसे मैंने पहले कहा करेज और कॉन्फिडेंस लेके आया, ये कुछ स्पेशल इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है ये कल ये टीम कुछ स्पेशल करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि साउद शकील हैज़ बीन वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द पाकिस्तान साइड। पिछले मैच में भी उन्होंने स्कोर किया था, इस मैच में भी किया था। खुशी होती है देख के क्योंकि वो डोमेस्टिक के एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुके हुए हैं। तो आपका क्या मैसेज, यू नो, व्हेन यू सी हिम डू वेल, कोई क्या आपकी टिप्स होती हैं या क्या गुफ्तगू होती है आपकी उसके साथ? देखिए, पहले तो थैंक्स टू PCB कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको वो खेला और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल के आया, परफॉर्मेंस दी, उसने नॉक कर रहा था पहले भी। आई थिंक बड़ा कॉम्पैक्ट कंपोज है, बड़ा काम है और गेम को काफ़ी रीड करता है, रन्स बनाने आ रहे हैं। जिस तरह उसकी अगर आप बैटिंग को देखा जाए ओवरऑल रन्स कैसे चुराने हैं, ढूंढने हैं, तो वो उसने जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी उसको वो जो है वो रेप्लिका कर रहा है। अल्लाह करे कल भी जाए और अच्छा करे। बहुत ही अच्छा लगता है कोई यंगस्टर आगे परफॉर्मेंस दे रहा है। एक और चीज़ इंग्लैंड की तरफ से जो हम बेसबॉल की बात करते हैं कि उनकी अप्रोच ऐसी है, यू नो, दे रियली गो आफ्टर द बॉलर्स, देयर बैटिंग इज़ लाइक दैट, वेयर उनकी अप्रोच ही ऐसी है। पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली एक अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग है, तो आप जब बात कर रहे होते हैं कि एक टारगेट को अप्रोच करना है, तो आप फिर क्या कहते हैं? देखिए, जैसे बेसबॉल आप बात कर रहे हैं, आई थिंक इन्होंने सब ने बैठ के इसके ऊपर, इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत बात की होगी, इसके ऊपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे, सब ने डाइजेस्ट किया होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने इसको इस तरह ट्राई करना है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी नहीं है, बहरहाल अगर वो खाली आया और उसने कहा ऐसे करना है, वो कर रहे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स बाद में वक्त के साथ आएंगे। वो नई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं, वो करते रहें, वो उनका अंदाज़ है। हमारे पास यंगस्टर्स हैं, अभी देखा जाए तो मैं अभी बाजिद को यही कह रहा था कि हमारे टेस्ट कितने हैं टोटल और उनके टेस्ट कितने हैं टोटल। तो हमारे पास ये जो लड़के खेल के आ रहे हैं, आई थिंक 124 हमारे टोटल टेस्ट मैचेस हैं, ये टीम खेल रही है, और उनके 535 हैं, ये 40 हैं, तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है अभी ना। तो हम एकदम ओवरनाइट अपनी पूरी गेम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह लड़कों ने परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस अंदाज से खेल के आ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ओवरनाइट एकदम आके जनाब वो गेम को चेंज कर दें। और सारे यंग लड़के हैं, तो आई थिंक वो उनके लिए काम कर रही है, ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है। हम गेम के अंदर हैं। पिछले मैच में भी हम लोग थोड़े से अनलकी रहे और हम लोगों को बहुत दफ़ा ऐसा फील हुआ कि हम ये गेम को ले जाएंगे और जीत जाएंगे। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ, सम हाउ दी अदर जो रिज़ल्ट आता है वो लगता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही साइड पे हो गया, बट हमें फील होता है, हमने हमारी कैलकुलेशन ये कह रही थी कि पिछले टेस्ट मैच में भी हम लोग मैच जीत सकते थे। हमने कुछ बड़ी गलतियाँ की, छोटी नहीं बड़ी गलतियाँ की, और इस मैच में भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने अंदाज से। उनका जो गेम है उसको हम लोग कंट्रोल किए हुए। कल का दिन स्पेशल है और इंशाल्लाह उम्मीद है हम अपने अंदाज से अच्छे रिजल्ट पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, कल का गेम आपने कहा स्पेशल है। ओवरऑल अगर आप इस कंडीशंस को देखें इस टेस्ट मैच में, तो
हमें ऐसा लगा कि पहले दिन ज़्यादा स्पिन हो रहा था, ज़्यादा बाइट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाई डाउन कर गया है। शायद आज बैटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन लगा ऐसे कि शायद पिच बैटिंग के लिए बेहतर होता गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 100%। और आज बल्कि क्लियर मैसेज था कैप्टन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी इन द मॉर्निंग कि भाई विकेट जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है। बल्कि कल भी बहुत अच्छा खेल रहा था विकेट, डे 1 में टर्न ज़्यादा था। तो इंशाल्लाह कल भी जो है हैवी रोल लेंगे हम और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और डाई डाउन करें। कुछ एक हमने जो डिसमिसल देखा था बाबर का, जब वो बॉल क्रैक को हिट की थी और अंदर आई थी, तो एक रिवर्स स्विंग का भी पिछले मैच में, पिछले जो पिंडी में जो मैच हुआ था, वी सॉ दैट इनटू प्ले। सो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं टू काउंटर दैट, बिकॉज वी विल गेट टू सी इट इन प्ले। देखिए कल जो है ना 15-16 ओवर नए गेंद से पहले वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो पिछले मैच में रिवर्स स्विंग हुआ वो गेंद बहुत अच्छा था, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। आई थिंक कल के 15 जो ओवर्स है ना ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उस तरह का रिवर्स स्विंग मेरा ख्याल है कि नहीं होने वाला, और चीज़ें जो है ना वो पहले कल का जो 1 घंटा डेढ़ है ना वो हमें काफ़ी फेवर देगा इंशाल्लाह। और लगा ऐसे ही जो 3 विकेट उन्होंने ली वो ज़्यादा गेंद पिच से पड़ के हुआ है, ऐसे हवा में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे बाबर का और रिजी का तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल हो गया। वो दुनिया के किसी भी बैट्समैन को गेंद करता तो मैं ये समझता हूँ वो खा ही जाता उसको। तो एक ही आउट हुआ है वो जो आई थिंक। अच्छा, एक पॉइंट था जब पहली इनिंग्स में कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स थे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि लग रहा था कि शायद अब पाकिस्तान जो है एक टाइम पे लीड हासिल कर सकेगा। सो ये जो की मोमेंट्स हैं टीम के काफ़ी आए हैं सीरीज में, वेयर दे थॉट के दे माइट बी डोमिनेटिंग द पोजीशन, बट वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आई। तो वो क्या रीज़न है आपके मुताबिक? आप लड़कों के साथ होते हैं, आपने उनको देखा भी है। इज़ इट इनएक्सपीरियंस, या कहेंगे कि थोड़ी सी अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है? क्या कहेंगे? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। मैंने अभी बताया था कि हमारे ये जो इस ग्रुप के अंदर है 124 टेस्ट मैचेस हैं और उनके 550 और डोमेस्टिक क्रिकेट वो कितनी लंबी चौड़ी खेल के आ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि ये यंग है शायद उसकी वजह से भी है, शायद नहीं बल्कि मैं कन्विक्शन के साथ कहूँगा ये उसकी वजह से भी है। बट इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये किसी वक्त भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और आई थिंक उन्होंने डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेली है। हमारा डिसिप्लिन का थोड़ा सा इशू है, हम डिसिप्लिन के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। टेक्टिकली भी वो थोड़े बेहतर हैं, डिसिप्लिन और टेक्टिकली ये दो उनकी चीज़ें हैं। बाकी बेसबॉल जो है ना वो इतना काम नहीं, मैं ये समझता हूँ वो इतना वो नहीं है कि जो हमें डैमेज कर रहा है। क्योंकि अगर एज ए बॉलर आप बॉलिंग खेल रहे होते हो, एज ए बॉलर बॉल कर रहे होते हो और बैट्समैन आपको इस तरह की शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, अगर आप टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आप डिसिप्लिन हैं तो आप बहुत ज़्यादा गेम के अंदर हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर बेसबॉल थोड़ा सा काम कर जाता है। हाँ, सवाल फिर यही बनता है जो मुश्किल सवाल है। काफ़ी मतलब मोस्टली टीम्स में कोलैप्स होते ही हैं, लेकिन जब कोलैप्स हो रहा होता है तो उसको रोकना कैसे है? ये मतलब मैंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में हर जगह कोलैप्स होता है, लेकिन उस सिचुएशन में कैसे एक हेड कोच कैसे इनपुट दे सकता है कि काम किया जाए या कोलैप्स रोका जाए? देखें जब कोलैप्स आता है ऑब्वियसली वो प्रेशर की वजह से आता है और प्रेशर डिसिप्लिन की वजह से आता है। जैसे इंग्लैंड अगर बॉलिंग कर रहा है वो डिसिप्लिन है और टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, प्रेशर आ गया। अब आपको प्रेशर को ब्रेक करना होता है, या तो आप प्रेशर को ब्रेक करेंगे या उस प्रेशर मोमेंट में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसकी जो एनर्जी आपको उसकी एनर्जी को ख़त्म करना होता है। तो अगर आप एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं तो उस वक्त आप प्रेशर को ना सोचें, आपकी जो मर्जी जो दिल के अंदर आ रहा है, आपका ब्रेन और हार्ट ये एक पेज पे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। या तो आप उसको थका दो या फिर आप प्रेशर को ब्रेक कर दो। ये दो सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से क्लियर मैसेज होता है, इवन यूसुफ की तरफ से भी है कि अगर आप ये समझते हो कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वो डिसिप्लिन है और टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो अब आप पे ये है कि आप उस प्रेशर को ब्रेक करना चाहते हो, आपको इजाज़त है, जैसे मर्जी ब्रेक करो। बाउंड्री मार के ब्रेक करना है या सिंगल्स करके ब्रेक करना है। और अगर आपको नहीं मिल रही है और आप इधर डिफेंस के साथ उसकी बॉडी को, उसके अंदर जो एनर्जी है या उसकी जो एनर्जी बैटरी है उसको बिल्कुल डाई डाउन कर दो, ताकि उसका जब अगला स्पेल आए, समहाउ दी अदर पिछले टेस्ट मैच में नहीं हो पाया, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़के कर पाए हैं और काफ़ी हद तक है। कल का नया दिन है, नए गेंद से पहले का सेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन लड़कों को कल का जो पहला सेशन है
उसके ऊपर डोमिनेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। यानी कुदरत का निज़ाम नजर आएगा हमें। कुदरत का इंतकाम भी है। आज मैंने पढ़ा है कि कुदरत का इंतकाम और कुदरत का निज़ाम ये बहुत मशहूर हो चुके हैं। Thank जल्दी you. से बता दें जाते जाते, आपने ऑब्वियसली टीम के साथ अपना टाइम स्पेंड किया है, सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा रहा है अभी तक आपके कोचिंग करियर का विद द टीम, और सबसे बुरा कौन सा रहा है? दुख भरा। देखिए मैं इसको ड्रेसिंग रूम में मैं अक्सर जब से मैंने इनको ज्वाइन किया, मैंने कहा यहाँ आप जीतते हो या सीखते हो, तो बुरा मोमेंट कोई नहीं होता। जब भी कोई टफ टाइम आता है वो आपको कुछ सिखाता है, अगर आप सीखना चाहो तो, एज ए कोच भी। और मैं अपने इन प्लेयर्स को भी यही कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ टीम है ये सीखने के लिए आई है और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई है। जो आपको चाहिए आप हमें बताओ और हम सीखते चले जाएंगे, आपकी खिदमत करते चले जाएंगे। आई थिंक जिम्बाब्वे वाला बुरा मोमेंट था। जवाब नहीं उन्होंने दिया। मैं सीखा उससे। सीखा। हाँ, आप सीखते हो। अगर आप कहोगे यार ये मोमेंट अच्छे नहीं थे, तो आप की सोच किसी और तरफ चली जाती है। अगर आप कहेंगे नहीं मैंने सीखना है, सीखा, तो आप ठीक सीखते है, रहते हैं। ठीक है। लर्निंग experience is what you're saying, but thank you so much for Thank your you. thoughts. Of course, tomorrow is going to be an important day for Pakistan, and they'll be looking to win this and basically level the series with England. On that note, we'll take a short breather and we'll be back just in a bit with a new guest. Back at the INVEREX Solar Energy Pitchside Show, Pakistan need 157 runs to win. England will be looking for those 6 wickets. I've got David Gower now in the studio. David, I mean, that wicket of Imam ul Haq, things were sort of going Pakistan's way. There was a bit of a partnership that was building, South Shakil and Imam ul Haq. But that momentum at the end shifted towards England. Yeah, momentum can go both ways. And if things go back the other way in the morning, it's a big if, then the game stays wide open, absolutely wide open. But yeah, England were desperately craving that wicket. You could see the delight on all faces because they tried everything. They tried switching the bowling, they tried, nothing was happening. The ball wasn't spinning, it wasn't turning, it wasn't seaming, it wasn't swinging, it wasn't bouncing. And finally, just that little drifting wide ball guided to slip just gave them exactly what they needed before the end of the day. It's still wide open. Yeah, you're talking about seaming and drifting. We saw that, a brilliant spell by Ollie Robinson, and the seamers generally looked really good, and there were some unplayable deliveries from them as well. Let's revisit some of them. Let's have a look at the fall of wickets. Fall of wickets, brought to you by INVEREX Solar Energy. Yeah, this was superb. It pitches about middle, just straighten hits, top off. Doesn't get better than that. Anderson producing a magic delivery. Angles in, seams away. I don't think many players could have got a back to that. The expression on Rizwan's face said it all. And then this, it's gone like an off break from way outside off stump. And again, the expression on Babar's face said it all. Maybe it's hit a crack because it's come back a long, long way. And it's sort of deviated so much it could do nothing about. This, I think, was sheer pace. There was a bit of movement, but I think Abdullah Shafiq was beaten by the pace of Mark Ward. It skidded off the surface. You'd think it kept low, but he was late in getting to it. And there was that sort of moment where you thought England are now going to surge through. But wasn't to be. That long partnership, and in the end, England really needed this, because Imam and South Shakir had batted so comfortably, so well, and it looked as if England were going to stumps, slightly dejected, but this elevated them. The spirits are now higher. Fall of wickets, brought to you by INVEREX Solar Energy. Bharat, I know that you spoke about not finding movement in the air today, but we saw the ball hitting one of those cracks, and that is that a concern for Pakistan at all for tomorrow? Will we get to see more of that? Will we get to see the cracks sort of open up even more, or it's not a worry? Yeah, you look at the whole day. One delivery where Anderson bowls such a magnificent delivery, that was just pure skill, and then that one delivery that comes back from Robinson, you think yes, it is hit a crack, but
you can't plan for that. You can't sort of go into the next day and say, oh, if it is a crack. That was basically unplayable. But overall, if you look at the way that the pitch has played, there's nothing in it. Nothing in it to suggest that you can't get runs. Nothing in it to suggest that it's unplayable. Nothing in it to suggest that you can't go at a fair clip. And almost it sort of got better and better to bat on. The first day, there was a bit of spin, bit of bounce, bit more pace, and then it's died down. So the pressure of the situation is what they'll have to deal with. I don't think there's any gremlins. Well, you're talking about something that Saud Shakil really validated today. He's a young, promising star of Pakistan cricket, scored heaps of runs in the domestic scene and now sort of transferring that success on an international level. He's also our top performer of the day. Top Performer, brought to you by Inverix Solar Energy. Well, I'll give you a left-hander's view on a very, very good left-hander, because he has all the right things. He's got a lovely temperament. He's got the ability to make that decision, that key decision, when to go hard, when to defend. A natural stroke maker, natural timer of the ball. Shots like that one over mid-off are just key shots when you're playing spin under these sorts of conditions. And he obviously likes batting. I know he's normally a couple of spaces higher up the order in first-class cricket. We've got to fit into a side wherever you can. And the figures are good, but he looks good, and that's the thing. We all make an impression about how a man looks, both just the stylishness, yes, which is always nice, but just the temperament, signs of a good temperament, which I think are very much there. Top Performer, brought to you by Inverix Solar Energy. You know, David spoke about temperament and how Saud Shakil has that. There's so much talk about baseball and that kind of approach, but when you look at Saud Shakil, he's like the proper conventional test batsman, has a hard grind out there. It's nice to see that he's being able to do that on this level, because you know more than anyone else, Bazat, that he's played so many first-class games and done so well there. Yeah, and the average in those first-class games is very good in the fourth inning. So that already tells you that he thrives under pressure. The fourth inning is obviously the hardest to really get going and get runs, but he prospers then. And those 98 innings have sort of set him up towards international cricket. He's got those matches or those innings before he's actually been pushed in. And for him, he says he's been ready for a while, and it's better to be ready and then being sort of into the test side. It's much better that way, wait a little longer than being actually come earlier than you expect, or pushed into the side earlier. Well, it's nice to have someone like Kumar Sangakkara as your idol. You know, growing up, that's what that's the kind of player he wanted to be like. When you look at him, you know, he's got that timing, David. I mean, what's been most impressive for you, apart from the temperament, just in terms of the kind of skill that you saw, the technique you saw? Well, there's a lot to pick on. I think what I like actually especially is when you're tackling the spinners, it is that blend between defence, so keeping out the good balls, the balls you can't score off, but then the ability, I think, to come down the ground straight. So you see people sometimes, say you're facing Jack Leach, left-hander facing Jack Leach. Well, the tendency for most is to go towards long on, maybe wide mid-wicket. He's so good, what he's done so many times now is come straight down the ground, get himself down the pitch, but in a position, I'll just change hands here, in a position to get the bat straight and get the ball going straight down the ground towards long off. And I think that takes talent and judgment, of course. You've got to pick the right one to do it. Yeah, the best thing is the left-hander. That's the right way around. So nothing can get better. Well, I didn't want to say that because there might be a bit of bias creeping in there, you know. And I don't like to offend people I like and work with, you know. No, I think you should offend Bazat. He's someone we like to offend Bazat, but we're looking at the experts' opinion, and one thing is for sure, that if Pakistan is to win tomorrow, they'll have to avoid that batting collapse. Let's hear from the experts what they have to say. How should they avoid it? Have your say. Brought to you by Inverix Solar Energy. Right, Bazat, realistically, how much of a chance does Pakistan have? Can they avoid that batting collapse? We've seen that throughout the series. There's a wicket that falls and then it sort of goes down in clutters. I love the way she says realistically.
Pakistan do have a I'm just being realistic. Pakistan do have a big chance because of the pitch, because of the behavior of the pitch. There is, as such, I didn't see anything today which would alarm them. Now, the only problem here is that he lost that one wicket which sort of tilted it towards England. Now, the first 15 overs is vitally important, and just to calm the dressing room, if you go out there and lose a wicket early, then the jitters start. Just to calm the dressing room, they need to get a partnership flowing. They still have batting. They've got Nawaz to come. Fahim Ashraf is pretty good with the bat. But if this partnership carries on for a bit, gets 30, 40 runs, then the pressure will shift to England. So I don't know how you avoid a collapse, but I can tell you those first hour and a half will be so vital. The new ball is due in 16 overs. DG, England are favourites for you for tomorrow? Yes, but not by a huge distance. I think the odds are just in their favour. If you want to put a figure on it, probably with that last wicket falling today, possibly 60-40 England. But that can change very quickly if, as you know, my good friend, the man I don't like to offend, is absolutely right. You know, if you get a partnership and if you get through that new ball, then suddenly the whole dynamic changes. And it's really about each and every batsman tonight sort of going to bed dreaming of being a hero. You take responsibility. Someone might get a good ball again, and there's nothing you can do about that. But if you get in and get settled, then it's incumbent to make it count. So then you just whittle away that, you know, down below 100. Then the whole feeling changes. Yeah, well, David Gower is talking about having that kind of self-belief with the Pakistan batsmen. I can tell you tomorrow is going to be really interesting. But yeah, you heard from the experts on Have Your Say. Have Your Say. Brought to you by Inverex Solar Energy. That first session is going to be key tomorrow, isn't it, Basil? Yeah, I think that the first 15 overs, yes, the new ball hasn't been a huge threat on this track. It's more about the ball reversing. And if England come out tomorrow morning and have a spell where Robinson, Wood or Anderson get the ball to move sideways and get a couple of wickets, then it's all England. But those first 15 overs till that new ball, they are so vital. Well, thank you so much for your thoughts, gentlemen. But we, of course, will be meeting, which is going to be an enthralling day's cricket. We'll be seeing you guys once again tomorrow at 9:15 a.m. live from Multan Cricket Stadium. Yeah, we'll be seeing you guys tomorrow. It's going to be Test Day 4, which is going to be a crucial one. Whether it's England, whether it's Pakistan, I'm sure that all of you are going to be tuned in. From here until tomorrow, it's goodbye. England fighting back. Pakistan had a commanding position at the start. Nicely played. Harry Brook is a serious talent with a massive future in the game. What a 100 that is. Yeah, gone. Wood's not hanging around, so the change has worked. Swept away by Brook, and it's comfortably taken. This might be out. This might be out. It's given. Oh, what a japper! What an absolute japper! Left on. It's nailed that stump back onto the ground. It's found its way through. Really sweetly timed. Lovely shot. Imam celebrates his 50. And he gets 50, his third 50.